हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रेशमी और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरे फेस पे लिटरली पानी पड़ रहा है, पर जो मेरा मेकअप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैंने ये वाटरप्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ मेकअप लुक कैसे किया, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने स्किन को प्रिपेयर करने के लिए मॉइस्चराइज़र क्रीम को अप्लाई किया और उसको अच्छे से मसाज किया, जिससे कि वो मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। मूविंग टू द प्राइमर, आई एम यूजिंग निक्स हनी बी प्राइमर, जो कि बहुत स्टिकी फार्मूला है। एंड इससे क्या होगा कि जो मेरा फाउंडेशन है इससे अच्छे से स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, जिससे कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और ट्रांसफर प्रूफ होगा। To conceal all my pigmentation, I am using a peach corrector from Sugar. Next I am gonna use Forever 52 foundation, and I like to apply foundation first with the brush and then blend it out with the beauty blender. And now this particular foundation is medium to full coverage and not going to budge entire day, and it looks amazing on pictures and videos. For concealer, I am using e.l.f. concealer, and now this is one shade lighter to my skin tone, so I am gonna use this as a highlighting concealer underneath my eyes and bridge of my nose, little bit on my forehead and little bit on my chin, so just to make my face more lifted. And I am gonna blend this concealer out with my pack sponge. I am also gonna take the same concealer and I'm gonna apply on my lid as my eyeshadow base. And now I'm gonna set this entire base using the MAC Studio Fix Compact Powder. It just set the makeup so beautifully and looks amazing on pictures and photos. Now to get that more defined and contoured face, I'm gonna using NYX contour palette. For the blush, I'm gonna use this Airic contour define kit, and this particular blush has a beautiful color and beautiful formula. Looks so natural and cute on the skin. For highlighting my face, I'm gonna use the same kit. To lock all my makeup, I'm gonna use this face mist from Plum and blend it out with the same beauty blender. For the eyebrow, I like to use eyebrow pencil or powders both, but today I'm gonna use this Lakme eyebrow definer pencil. Firstly, I comb this and then fill it up with a little stroke. For the eyeshadow, I'm gonna start with this orange shade and apply on my crease area with the wiping motion and build up this color. And now I'm using this dark brown shade for my outer corner and place it like that and blend it out in circular motion. Now I'm gonna take this pink shade and apply on my center of eyelid.
To open up my eyes, I'm gonna use this Recode nude pencil and apply all over my waterline area. For the lips, I'm using Airic dark brown lip liner and I'm gonna outline my lips and then filling it up with Nykaa matte to last transfer proof liquid lipstick in the shade Kashi. To set my face, I'm gonna use this Forever 52 makeup fixer. Alright, that's it for this video. I hope you enjoyed this tutorial. Let me know in the comment section box. If you like this video, you know what to do. Make sure you subscribe and like the video. I'll see you in my next video. Bye.